কৃষকলৈ 21 কোটি আৰু ব্যৱসায়ীলৈ 19 কোটিৰ আৰ্থিক সাহায্য। গুৱাহাটীত MSME কৃষি আৰু সম্পদ কাৰ্নিভেল। ইউকো বেংক জ'নেল অফিচ গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। মাছখোৱাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্নিভেল। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কলিকতা কাৰ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক শশীকান্ত কুমাৰ। লগতে উপস্থিত থাকে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ DPM শেৱালিকা মেধি আৰু DICCGM উমেশ কুমাर। समग्र आसाम स्टेट वासियों को नमस्कार। मैं यूको बैंक का आसाम स्टेट का जोनल हेड हूँ। तो अभी बैंक लास्ट 12 तारीख से आगामी 31 मार्च तक एक कार्निवल कर रहा है। ये कार्निवल है एग्री MSME और रिसोर्स कार्निवल। मतलब हमारा एग्री एवं MSME बोरोवर को हम लोग लोन दे रहे हैं, उसको एलिजिबिलिटी के अनुसार हम लोग लोन दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ जितना सारा एग्री एवं MSME कस्टमर है वो हम लोग के साथ जुड़े, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो कस्टमर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो उनका जान पहचान का सभी लोगों को यूको बैंक में लेके आए। इस कारण से बैंक के पास बहुत अच्छा स्कीम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है अभी आज का डेट में। हम चाहते हैं दूसरा बैंक में भी जो जुड़े हैं वो भी हमारा साथ जुड़ जाए, हम लोग उसको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस देंगे। और मेरा जो एग्रीकल्चर कस्टमर है, क्योंकि आसाम में एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम होता है, हम चाहते हैं जो एग्री रिलेटेड जितना सारा एक्टिविटी है वो आगे बढ़ने के लिए बैंक से लोन ले और भी आगे बढ़े। इसके अलावा हमारा जो रिसोर्स कार्निवल चल रहा है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बहुत हाई है। हमारा बैंक का एक नया स्कीम है यूको 444 डेज का। ये 444 दिन का स्कीम में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। ये 7.5% रेट में आप लोग बैंक के डिपॉजिट रखिए और अपना पूंजी को सुरक्षित रखिए। ये सुरक्षित मानी से हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोगों को और भी लोन दे पाएंगे और आपका पैसा को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। बैंक के इसके अलावा भी नॉर्मल बहुत सारा स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। जो छोटा छोटा MSME ग्रुप है उसका जितना लोग काम करते हैं उनको हम लोग सैलरी सुविधा भी देते हैं। उसमें रेट उनका इंश्योरेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो सैलरी सुविधा है उन पे हम लोग 3 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट सुविधा भी देते हैं। इसके तो मेनली यही है। और अब लोग एक कार्निवल ये लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं है, ये कार्निवल हमेशा के लिए चलते रहेगा। और यूको बैंक अब लोगों के लिए है। वी ऑनर्स योर ट्रस्ट ओनली। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ हमारा जो पुराना एग्जिस्टिंग कस्टमर है और नया कस्टमर है, ये कार्निवल का टाइम में हम लोग जो लोगों को लोन ऑलरेडी दिया है, हम उन लोगों को आज सैंक्शन लेटर देना चाहता है। हमारा GM सर, शशि सर इधर यूको बैंक हेड ऑफिस से आज हमारा स्टेट में आए हैं ओनली फॉर दिस पर्पस। ये जो सैंक्शन हम लोग हमारा स्टेट में किए हैं, सर का तरफ से हम लोग ये सैंक्शन लेटर सबको देना चाहते हैं। और मैं सारे सदस्यों को, SHG ग्रुप मेंबर और मेरा MSME ग्रुप मेंबर को बोलना चाहता हूँ, आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी जो सर इतना दूर से आए हैं। सर अपना जो पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया है इस कार्निवल किस काम के लिए है। ठीक है, जानते हैं यूको बैंक एक भारत सरकार का उपक्रम है। हम इसी विश्वास से चलते हैं कि ग्राहक का विश्वास ही हमारा मेन मुद्दा है। ये एक कार्निवल हम कोशिश कर रहे हैं अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे जुड़ने का, नए कस्टमर्स को ऐड करने का। इस कार्निवल का उद्देश्य ये है कि जितना भी हम MSME कस्टमर हैं, जो कि भारत सरकार का एक प्राथमिकता है, एग्रीकल्चर जो कि दूसरी प्राथमिकता है, उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बैंक के साथ जोड़ सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सहायता प्रदान कर सकें उनके बिजनेस के लिए, उनके रोजगार में। और रिसोर्स एक ऐसा कार्निवल है जो कि जिसके माध्यम से हम जिन कस्टमर्स के पास डिपॉजिट्स है, जो बचत खाता में पैसा रख सकते हैं, जो हमारे टर्म डिपॉजिट में रख सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट हमने स्कीम्स बनाई है। डिफरेंट इंसेंटिव्स भी हम दे रहे हैं। जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस एक माध्यम है जिसमें कि एक पीरियड के अंदर हम कार्निवल जरूर कर रहे हैं। ये कार्निवल जस्ट एक स्टार्ट है। हम इसका कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्निवल हम कंटिन्यू करें, ताकि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ हम जुड़ पाएँ, ताकि बैंक का भी भला हो और हमारे जो कस्टमर्स हैं उन तक भी हम अपनी योजनाएं पहुंचा पाएँ और उनके लिए भी हम उनके रोजगार में सहायता प्रदान कर सकें। আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হৈ DICCৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ। মই জেনেৰেল মেনেজাৰ। আমাৰ যিখিনি স্কিম আছে
আমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইনচেণ্টিভ দিব পাৰে MSME ছেক্টৰক সেইখিনিৰ ওপৰত মই জোৰ দিছোঁ আৰু বেংককো মই মানে কৈছোঁ যে তেখেতসকলে যাতে তেওঁলোকক গাইড কৰে আমাৰ যিখিনি ষ্টেটৰ ইনচেণ্টিভ আছে তেওঁলোকে যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক MSME ছেক্টৰ বিজনেছেই কৰক তেওঁলোকে যাতে লৈ এই ইনচেণ্টিভখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকে ভাল বিজনেছ এটা কৰিব পাৰে যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ষ্টেটে বহুত সুবিধা দিছে এই সুবিধাখিনিৰ বিষয়ে মই হাইলাইট কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ তাত আহি সা সুবিধাখিনি ল'ব পাৰে ইউকো বেংকৰ লগত জড়িত ইউকো বেংকৰ ছাৰ্ভিচটো মই খুব ভাল পাইছোঁ মোৰ প্ৰথম আৰম্ভণিত ৮০,০০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ ৪০ লাখ টকাত গুণ হৈছে ইউকো বেংকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই আজি ইমানখিনি ডেভেলপ হ'ব পাৰিছোঁ নেশ্যনেল লেভেলত পোৱাৰ কাৰণে এটা সুবিধা পাইছোঁ মোৰ বৰ্তমান নাৰ্চাৰীখনত ২৪জন মানুহক ২০জন মানুহক মই পাৰ্মানেণ্ট হেৰি দি আছোঁ চাকৰি দি আছোঁ কাম কৰি আছে আৰু মই আধা বিঘাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া ২০ বিঘালৈকে মই বৰপেটাৰ মোৰ নাম সঞ্জয় দাস মই এটা SM গ্ৰুপ বুলি এটা SME ইণ্ডাষ্ট্ৰী নেইল আৰু ব্লেকৱেৰৰ প্ৰপৰ্টাৰ হওঁ ইউকো বেংকৰ লগত 2002তে মই 4.5 কৰোৰৰ এটা লোন লৈ কিনে SMEটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই ইউকো বেংকৰ গোটেই ধুনীয়া ছাপৰ্ট এটা পাই আছোঁ আৰু আজি তাৰে SME আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে এইটো প্ৰগ্ৰেমটো পতা হৈছিল তো খুব ছাপৰ্টিং হেৰি হয় বেংক হয় মানুহক খুব সোনকালে ইয়াতে একুৱাৰ্ড কৰি কিনে এটা খুব ধুনীয়া বিজনেছ কৰিব পাৰিছে এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ ইউকো বেংকৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত এতিয়ালৈকে খুব সন্তুষ্টিৰে বিজনেছ কৰিব পাৰিছে গুৱাহাটীৰ স্থানীয় বাসিন্দা মই ইউকো বেংকৰ পৰা 2018ৰ পৰা জড়িত খুব ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব ফেমিলি নিচিনাকৈ কাম কৰোঁ তেওঁলোকো খুব ছাপৰ্টিভ খুব ফেমিলি নিচিনাকৈ মোক চাই দিয়ে গোটেই কিবা গাইডো কৰে কিবা ভুল হ'লে গাইড কৰি দিয়ে আৰু যিমান পাৰোঁ মই ইউকো বেংকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰিম তেওঁলোকে মোক মোৰ হাউচিং লোনো আছে ইউকো বেংকৰ পৰা বিজনেছ লোনো আছে তেওঁলোক খুব ছাপৰ্টিভ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা খুব ছাপৰ্ট পাওঁ জ'নেল অফিচৰ পৰাও খুব ছাপৰ্ট পাওঁ আই উইচ ইউকো বেংক অল দ্য ছাকচেছ আৰু তেওঁলোক চবৰে যেন উন্নতিত তেওঁলোক যেনেকৈ মোক হেল্প কৰিছে চবকে যেন হেল্প কৰিব পাৰে থেংক ইউ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হিমাদ্ৰী কলিতা আৰু মই চন্দ্ৰপুৰ ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ চন্দ্ৰপুৰ ইউকো বেংকৰ গ্ৰাহক হয় আমি মই 2008 চনৰ পৰাই ইউকো বেংকৰ লগত জড়িত আৰু সেইবাবে চাগে আজি এই কাৰ্নিভেলত মই মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ বা সৌভাগ্য ইয়াতে হেৰি কৰাৰ কাৰণে আৰু ইউকো বেংকৰ লগত মই যেতিয়াৰ পৰাই মই ইউকো বেংকৰ গ্ৰাহক হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ইউকো বেংকে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মই নিজে পাৰ্চনেলিতো হয়ে আকৌ মই গোটৰ লগতো জড়িত SHGৰ লগত আৰু সেইকাৰণে মই পোনপ্ৰথমে ইউকো বেংকক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি এইখিনি আগুৱাব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু SLMৰ জৰিয়তে সেইখিনি মই বেজেৰা ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ বেজেৰা ইউকো বেংকৰ মই সদস্যা তাৰমানে বৰ্তমানৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যা মই বেজেৰা ইউকো বেংকৰ পৰা 2016 চনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ মই বেজেৰা ইউকো বেংকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক ধুনীয়াকৈ লোন দি আছে আমি লোনবিলাক ভালকৈ মাৰি আছোঁ মানে ইনষ্টলমেণ্ট ভালকৈ দি আছোঁ সেইকাৰণে আমাক বাৰে বছৰে বঢ়াই দি আছে প্ৰথমৰ পৰা আমি 1 লাখ লৈছিলোঁ এতিয়া আমি 6 লাখ 7 লাখ লোন ল'ব সামৰ্থ্য হৈছোঁ মই অপৰাজিতা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হওঁ আৰু বেংক মিত্ৰ হয় বৰ্তমান মই বেজেৰা ব্লকৰ পৰা বেংক মিত্ৰ হৈ 223টা গোটৰ লোন চলি আছে বৰ্তমান আমাৰ গোটটো বৰ্তমান 6 লাখ টকা লোন লৈছে আৰু এতিয়া হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিছে খেতি কৰিছে আৰু বিজনেছতো লগাইছে সৰু দোকানো দিছে এইখিনিয়ে মই ক'ব লগা আৰু ইউকো বেংকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈকেও যেনেকৈ ছাপৰ্টত দি থাকে আৰু গোটকেইটাক আগবঢ়াই নি থাকে সেইখিনিয়ে আৰু বৰ্তমান ইণ্ডিভিজুৱেল লোনৰ কামো কৰি আছে হৈ আছে বৰ্তমান Stay informed, stay ahead. News NE 365.